lesson The Dying Sun by Sir James Jeans. Sir James Jeans was a famous physicist, physics के वो माहिर थे, and a famous mathematician. He was a professor also, and in this lesson he has given the Big Bang theory. You can say the reason for the creation of Earth, which he has mentioned in this lesson, refers to the Big Bang theory. यानी कि अर्थ की क्रिएशन जो है वो एक्सीडेंटल और उसका कभी सन का पार्ट होना, दैट इज कॉल्ड द बिग बैंग थ्योरी. सो वी विल स्टार्ट विद द लेसन. अ फ्यू स्टार्स आर नोन which are hardly bigger than the earth, but most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. So कुछ सितारे ऐसे हैं जो जमीन से बामुश्किल ही बड़े हैं, यानी जमीन के साइज से थोड़े छोटे ही हैं. हार्डली बिगर देन द अर्थ, यानी कि थोड़े से ही बड़े होंगे अर्थ से, अर्थ के साइज के होंगे या उसी से थोड़े से बड़े होंगे. लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे हैं कि एंड मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज, और लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे हैं कि वो इतने बड़े हैं कि उनके अंदर हजारों अर्थ समा सकती हैं. And still there will be room to spare, फिर भी जगह बच जाएगी. Means कि this first line is about the size of stars, कि कुछ स्टार्स जो हैं वो अर्थ से थोड़े से ही बड़े हैं, लेकिन कुछ इतने ज़्यादा बड़े हैं कि उसमें हजारों अर्थ समा सकती हैं, फिर भी जगह बचे. So you have just read about the size of the stars. The stars that you see at night, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे कि actually those stars are burning balls of fire. They are extremely hot. इसीलिए वो चमकते हुए नजर आते हैं कि उनके अंदर constantly explosions हो रही हैं. They are actually suns. एक तो हमारा सन है, वो जो स्टार्स हैं, they are just like our sun, but उनको हम सन नहीं कहते, उनको stars because they are millions of miles away from the earth. So here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of earths. तो ये पूरी ही लाइन यहाँ तक size of stars के बारे में है कि आपने कभी कभी इतना बड़ा कोई स्टार हमें नजर आएगा जो अर्थ के साइज से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जो है साइज ज्यादा बड़ा होगा. इट विल बी लार्ज इनफ टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ. मीन्स कि इतने छोटे छोटे इसीलिए नजर आते हैं बिकॉज दे आर टू फार अवे. इसीलिए वो छोटे छोटे डॉट्स नजर आते हैं, ये स्टार्स हमें नजर आते हैं. अदरवाइज दे आर वेरी लार्ज इन साइज. And the total number of stars in this universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the earth. पहली बात हो गई साइज की. Now second बात हो रही है इस पैराग्राफ में about number of stars, कि दुनिया में जितने कायनात में सितारे हैं इतने ज्यादा हैं जितने कि किसी साहिल समंदर पे रेत के जरे होंगे. Uncountable stars. There are so many stars that we cannot count them, just like we cannot count the grains of sand. So तादाद बहुत ज्यादा है स्टार्स की. यहाँ बताया है नेक्स्ट लाइन में कि the number of stars is infinite. It cannot be counted. लातादाद है. So such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी कायनात में हम कितने छोटे हैं. एक जर्रे के बराबर हैं बिल्कुल, कि जब हजारों लाखों तो सितारे हैं, लाखों तो अनकाउंटेबल, हजारों लाखों भी नहीं, इन्फिनिट हैं, अनकाउंटेबल. यू कैनॉट काउंट द स्टार्स. तो हम तो फिर बिल्कुल गायब हैं इस पूरी कायनात में. So far we have done the first paragraph in which you have come to know about the size of different stars and about the number of stars. They vary in size. Some are hardly bigger than the earth and some are large enough that millions and millions of earth could be packed inside them. Okay? और number of stars को compare किया है grains of sand on seashores of the earth पे. Now coming to the second paragraph. These millions of stars are wandering about in space. ये millions of stars, they are wandering. Wandering means roaming, moving here aimlessly, moving here and there aimlessly. Yeah, roaming. R-O-A-M-I-N-G. You need to write the word synonyms. वो आपको इन्हीं में से आने हैं lessons में बीच में.
तो वैसे इस चैप्टर में कोई ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स नहीं है, यू कैन से जस्ट यू कैन थोड़े बहुत हैं. Wandering is roaming, moving here and there aimlessly. Some stars, the millions of stars are wandering about in space. A few form groups which journey in company, but most of them travel alone. कुछ stars ऐसे हैं जो एक group की form में travel करते हैं. You always see them in a particular shape. For example, एक group कहने the Great Bear, square सी shape बनती है और उसकी एक नॉक होती है, वो पॉइंट कर रहा होता है नॉर्थ स्टार की तरफ. ये एक ऐसा ग्रुप है जो हमेशा इकट्ठे ही देखा गया है. सेंचुरीज इसको इकट्ठे देखा गया है. द ग्रेट बियर इसको कहते हैं, इस ग्रुप को. बट मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल अलोन. मोस्ट ऑफ द स्टार्स दे ट्रैवल अलोन. सम ऑफ देम ट्रैवल इन ग्रुप्स. And they travel through a universe so immense. Immense means huge, large, vast. V-A-S-T, vast. And they travel through a universe so immense that it is very, very rare event indeed for one star to come anywhere near to another. And कुछ जो ये सितारे हैं यूनिवर्स में, इतना इमेंस यूनिवर्स है कि ये इतना फैली हुई कायनात है कि ये बहुत ही कम होने वाला ये मौका है, इवेंट है कि एक सितारा दूसरे सितारे के पास आए या टकरा जाए दूसरे सितारे से. For the most part, each star makes its voyage in complete loneliness. और ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक सितारा जो है अपना जो वॉयज है, वॉयज यहाँ पे मेटाफोरिकली यूज हुआ है. वॉयज इज एक्चुअली अ जर्नी बाय सी. कश्तियाँ जो समंदर में ट्रैवल कर रही होती हैं, जर्नी बाय सी के लिए वॉयज यूज होती है. तो इस पे यहाँ पे सितारे को ट्रैवल करने, सितारे का जो रूट है ट्रैवल करने का, उसको कंपेयर किया है एक शिप से. वन स्टार ट्रैवल्स in complete loneliness like a ship on an empty ocean. जैसे कि ये हम तस्वीर कर सकते हैं, एक शिप ओशन में है तो हद निगाह तक पानी ही नजर आता है. ओशन इज अ वेरी, यू कैन से, वास्ट वाटर बॉडी, कि उसमें अगर एक शिप है तो उसको दूर दूर तक कहीं दूसरी शिप नजर नहीं आती. सेम इज द केस विद स्टार्स, कि वो जो अपनी जर्नी कर रहा है, वॉयज कर रहा है, वो कंप्लीट लोनलीनेस में है कि उसको अपनी वॉयज के दौरान दूर दूर तक सितारा जब गर्दिश कर रहा है उसके आस पास या दूर दूर तक कोई दूसरा सितारा नहीं आता. In a scale model in which the stars are ships, the average ship will be well over 1,000,000 miles from its nearest neighbor. एक स्केल मॉडल में अगर स्टार्स को हम शिप कंसिडर करते हैं तो एक शिप जो है वो अपने करीबी हमसाए से millions miles away होगी. From this it is easy to understand why a star seldom finds anywhere near it. So क्योंकि जाहिर है इसमें डिस्टेंस, इस पूरे पैराग्राफ में दो बातें हुई हैं. एक तो ये कि स्टार्स दे ट्रैवल थ्रू अ certain route, they either travel in groups or alone. And second, it's a very rare event for one star to come near another star, कि गर्दिश करते हुए एक सितारा दूसरे सितारे के पास नहीं आता. ये बहुत ही कहने के कम होने वाला वाकया है कि ऐसा हो. बिल्कुल जैसे समंदर में कश्तियाँ अकेले सफर करती हैं, समंदर नहीं, बहीरे में, ओशन, उसी तरह कायनात में जो रूट है स्टार्स का वो ऐसा है कि दूसरा स्टार उसके पास कहीं नहीं आता. We believe, third paragraph, we believe, however, that some 2,000 million years ago this rare event took place. And now he's saying कि कुछ 2,000 million years ago, 2,000 करोड़ साल पहले ऐसा वाकया हुआ कि एक जो सितारा था, wandering blindly through space. Wandering blindly means roaming about aimlessly, roaming without any purpose, without seeing, roaming blindly through space, happened to come near the sun. कि कभी कई हजारों साल पहले, ये कह रहा है कि करोड़ों साल पहले ये वाकया हुआ कि एक सितारा गर्दिश करता हुआ
हमारा जो सूरज है उसके करीब आया, just as the sun and moon raise tides on the earth, so the second star must have raised tides on the surface of the sun. So बिल्कुल ऐसे ही जैसे सन और मून जो हैं अपनी ग्रेविटी से अर्थ की सरफेस पे टाइड्स रेज करते हैं, इसी तरह ही ये जो दूसरा सितारा करीब आया, इसने टाइड्स रेज की सन की सरफेस पे. मून कौन सी टाइड्स रेज करता है? दोज आर यू कैन से ऑन द वाटर. फुल मून की ग्रेविटी बहुत होती है और वो जो वाटर है वो उसकी तरफ उतना ही ऊपर उछल के आता है, वाटर को अपनी तरफ खींचता है. Water of the sea becomes very dangerous when there is a full moon because moon की gravity उसको अपनी तरफ खींचती है. तो ये tidal pull है जो moon की होती है अर्थ के ऊपर, और sun की भी होती है ये ग्रेविटी, जिसकी वजह से एक्चुअली हम अपने ही मदार में घूम रहे हैं. जमीन जो है वो सन के गिर्द ही घूमती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सन, उधर से निकल के कहीं और नहीं चली जाती. सो दिस इज अ ग्रेविटेशनल पुल. Actually, that is why we are on this earth. We stand on the earth. But they would be very different from the little tides which the small mass of the moon raises in our oceans. अच्छा, जो ये अब एक्सप्लेन कर रहा है वो ये है कि जो दूसरा स्टार हमारे सन के करीब आया, उसने जिस तरह की टाइड्स, जिस तरह की लहरें कहने उठाई सूरज की सरफेस पे, वो उससे बहुत डिफरेंट हैं जो मून हमारी जमीन के ऊपर बना देता है. ओशन जो खिंच खिंच के मून की तरफ आता है उससे डिफरेंट थी. जो सन की सरफेस पे जो टाइडल मास बना वो इट वाज सॉलिड. ऑफ कोर्स an immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun. एक बहुत बड़ी टाइडल वेव ही बिलीव्स बनी सन की सरफेस पे. वो मोल्टन लावा की होगी. ऑफ कोर्स वो it was of lava because sun is a burning ball of fire. It was not water. At last forming a mountain so high that we can hardly imagine it. और वो कुछ लावा का, कुछ वो मोल्टन फॉर्म का, कुछ फायर का, कुछ इस किस्म का टाइडल मास था वो, कि जो उसका कॉम्बिनेशन था that was you can say it must have been very hot combination of tide जो मून की सरफेस पे बना. As the cause of the disturbance came nearer and nearer, the mountain would rise higher and higher. Now as the star, the second star which is coming towards our sun, वो करीब करीब आता जा रहा है सन के, तो जो mountain of tide जो रेज हुआ है सन की सरफेस पे due to the gravity of that star, वो बड़ा होता गया. जैसे जैसे दूसरा सन करीब आता जा रहा है, सन की सरफेस पे जो माउंटेन ऑफ टाइड्स बना है वो जो है बड़ा होता जा रहा है खींच के. माउंटेन हायर, द माउंटेन रोज हायर एंड हायर. एंड बिफोर द सेकेंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन, और जैसे ही ये दूसरा सितारा जो सन के करीब आया था ये दूर जाने लगा, इसकी जो टाइडल पुल थी, इट्स टाइडल पुल had become so powerful that this mountain was torn to pieces and threw off small parts of itself into space. इसकी टाइडल पुल इतनी स्ट्रांग हो गई कि जो लावा, मोल्टन लावा का माउंटेन जो बना हुआ था सन की सरफेस पे, दैट ब्रोक ऑफ, इट गॉट टॉर्न एंड इट्स स्मॉल पार्ट्स थ्रू ऑफ इनटू स्पेस. स्पेस में बिखर गए उसके टुकड़े. दीज स्मॉल पीसेस हैव बीन गोइंग राउंड द सन एवर सिंस. ये जो छोटे टुकड़े हैं ये सूरज के गिर्द उस वक्त से अब तक घूमते हैं. इनको कहा जाता है प्लैनेट्स, ग्रेट एंड स्मॉल, छोटे और बड़े, ऑफ विच आवर अर्थ इज वन, जिसमें से ये हमारी जमीन जो है एक प्लैनेट है. हमारी जमीन भी प्लैनेट है. सो व्हाट आर एक्चुअली प्लैनेट्स? प्लैनेट्स आर द ब्रोकन पीसेस ऑफ द tide, of the solid tide that was formed on the surface of the sun because of the second star. The sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot. Definitely. We already know that the sun is very hot. The stars, which are the burning balls of fire, they are extremely hot. Far too hot for life to exist on them. So, you see, आपसे क्वेश्चन आता है ये वाला अक्सर, what are stars? So you have to say that the stars are burning balls of fire. They are far too hot for life to exist on them. So also they are like the sun actually. So also no doubt for the pieces of the sun when they were first thrown off, और जो शुरू में
सन से टूट के जो टुकड़े बिखरे थे, टाइडल पुल जो माउंटेन बन गया था, टाइडल पुल की वजह से सन की सरफेस पे जो माउंटेन के टुकड़े बिखरे थे, दूर दूर बिखर गए थे, वो भी बहुत गर्म थे और आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडे हुए. ग्रेजुअली दे बिकेम कूलर. Until now they have very little heat of their own, और अब उनकी अपनी गर्माइश जो है वो बहुत कम हो गई. Their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them. और उनकी जो गर्माइश है वो कहाँ से आती है? सन की तरफ से, जो सन उनके ऊपर सन करता है. यानी कि अर्थ की अपनी हीट नहीं है. अर्थ कहाँ से हीट लेती है? सन से लेती है. And Earth is also one of the broken pieces of the mountain of tides that formed on the surface of the sun. And in the course of time, one of these cooling pieces gave birth to Earth. See, planets की बात हो रही है कि one of these cooling pieces are the planets actually, Mercury, Venus, Earth, Mars. इनमें से एक जो था, it became suitable for life and it gave birth to life. We do not know how, when or why this happened. Now he has not given an exact, बहुत ही accurate उसने नहीं बता दिया आपको कि हाँ हमें बहुत exactly पता है. Here is a doubt. He has left this doubt. He has given a Big Bang theory. This theory is called the Big Bang theory, कि जिसमें ये समझा जाता है कि अर्थ जो है वो कभी सन का हिस्सा था और जमीन पे जो है लाइफ किस तरह से एग्जिस्ट करना शुरू हुई, ये थ्योरी फर्दर बताती है. वो आगे वो यही थ्योरी कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने अपना डाउट एक्सप्रेस कर दिया. वी डू नॉट नो हाउ, व्हेन और व्हाई दिस हैपेंड. नो, साइंस डज नॉट एक्चुअली एक्सप्लेन इट, बस अजम्पशंस वो देती है कि लाइफ स्टार्ट हुई जमीन पे सिंपल ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में. सिंपल ऑर्गेनिजम्स जिनके वन सेल्स थे, विच वर माइक्रोस्कोपिक. जो आप पढ़ते आए होंगे, जो साइंस के बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा है, पैरामीशियम, यूग्लिना, अनीबा, के दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप. सो इट इज बिलीव्ड कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में लाइफ जो थी वो स्टार्ट हुई. whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying. और उनकी लिविंग पावर किस चीज पे डिपेंड करती थी? रिप्रोड्यूस करने पे बिफोर डाइंग. यानी कि एक सेल है तो वो दो में डिवाइड हो जाएगा बिफोर डाइंग. बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग्स केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ विच, ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, हैज इन द एंड प्रोड्यूस्ड बीइंग्स. अच्छा, ये कह रहा है कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स से फिर हम डबल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बने. फिर ग्रेजुअली देयर वर क्रीचर्स. इट इज बिलीव्ड दैट देयर वर क्रीचर्स लाइक जेलीफिश and other sea creatures. फिर there were creatures like amphibians, frogs जो sea में भी रहते थे, land में भी, then reptiles, then birds, and then there were mammals. and mammals की form में जो latest he says के latest जो animal है वो उसके बारे में अब बात कर रहा है. and has in the end produced beings whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, their sense of beauty, and the religions in which lie their highest hopes and noblest desires. So this is the theory he has given for the creation of mankind, the creation of life on earth, the creation of man. यहाँ पे जो end में सारी definition दी है इसने, वो actually human beings की दी है कि इसी तरह लाइफ जो थी complex होती गई और आखिर में क्या चीज बनी? ऐसे लोग जिनकी फीलिंग्स थी, एम्बिशंस थे, जिनके पास सेंस ऑफ ब्यूटी है, जिनकी रिलीजन भी बन गया एक, और उनकी हाईएस्ट होप्स और नोबलेस्ट डिजायर्स भी हो गई कि ये हमारी अच्छे भी ख्वाहिश थी, या मॉरल्स, एथिक्स, मैनर्स, सब से कह लें कि यानी कि क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन मैन को कंसिडर किया जाता है. दैट वाज बॉर्न, जिसको सेंस थी. So this is the theory given by Sir James Jeans for the creation of Earth and for the beginning of life on Earth. So we will continue with it in the next video.